Yes, good morning, everyone. Good morning, Dhanishri. Yes, good morning. Good morning, guys. Good morning, Shiv Kumar. Yeah, I hope the audio and visuals are fine. बेटा एक बार thumbs up दे दो सारे के सारे जो भी live lecture में हैं. Just give a thumbs up in the chat box so that I'm aware that all the audio and visuals are perfectly fine so that I can start with the class. Yes, Nitin Chaudhary, Veer Doshi. Okay, perfect. They are saying the audio visuals are fine. Dr. Kishore, Preeti. Okay, Shiv, Kapil, Lohita, Muskan, welcome to the session. Krisma, Rutuja, Rutika, very good, guys. I hope you all are like enjoying the sessions, right? So yes, Jessica, Angel, Matthews, very good, guys. Mehul, very good, guys. So yes, yesterday we were discussing the part one of general embryology, where I have discussed about the spermatogenesis and the oogenesis. Tanupriya, hello, hello Tanupriya, Nitika, perfect, okay, perfect. I hope everyone is attending the class, okay, with full enthusiasm, right? So before starting with the topic, just give me a very simple answer. Just let me ask two three questions from yesterday's session, guys. What is the time taken for spermatogenesis? And please do type in the chat box so that I'm aware that you all are like attending the session. Yes, Garima, Sarishta, very good, perfect. Hmm. Yes. So good morning, good morning. Okay. Yes, Angel Matthews, very good. 74 days is the best answer. Yeah. Nitika Ghosh, it is 72 to 74. Raj Soni, very good. Perfect, guys. Yeah, that's the perfect answer. Yes, Veer Doshi, Nitin Chaudhary, Shiv, Dr. Kishore, Rutuja, Sarishta, Jista, Ishraq. Very good, guys. Perfect. Okay. Time taken for capacitation, guys. What is the time taken for capacitation? Anyone would like to? Rathore Mahinder. Okay, beta. What is the time taken for capacitation, guys? Anyone? Yeah, the time taken for capacitation. Yeah, very good, Dhanashri Narware. Very good. The fastest answer, yeah, Dara Jasita has given actually. Yeah, Lohita, very good. It's 7 hours. ठीक है. चलो तुम लोग notes revise कर रहे हो. That is more than sufficient for me. Yeah. Chalo. We are now going to study about the stages in the development of the follicle. Stages in the development of the follicle. So let us draw our own diagram, guys. Drawing diagrams is very important in the first year, right? Drawing diagrams is very important in the first year. If you are like even in anatomy, I would say like if I think many of the students are from the first year or second year, like बेटा anatomy में बिना diagrams के बात नहीं बनेगी. ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छी memorization के लिए, if you have to like retain better, guys, you have to use the diagrams, okay, as your priority. So kindly draw the diagrams with me. So stages in the development of the follicle, I'll be starting from here only. Yeah, okay, stages in the development of the follicle. Yes. Okay, just okay. Hmm. Sure, sure. So everyone is aware. Yes, everyone is aware, guys. Everyone is aware that we have something which is called as the primary oocyte. Okay, we have something which is called as the primary oocyte. Okay, now this primary oocyte, it is actually surrounded by a flat layer of cells. Okay, it is surrounded by a flat layer of cells. Now these cells are squamous epithelial cells only. Okay, these are like arranged in a single layer, guys. Yes, these are arranged in a single layer, and these are flat cells, I would say. Yeah,
These are squamous epithelial cells, or I can simply say these are the flat cells, okay, or I can say the stromal cells. The stromal cells, basically ovary के अंदर stroma होता है, we have the stromal cells, right? Or I can also say it as the connective tissue cells. Connective tissue cells, right? So and these flat cells, stromal cells or connective tissue cells, are actually the follicular cells of the ovary. These are the follicular cells of the ovaries. So primary oocyte is getting surrounded by the follicular cells. Okay, primary oocyte is getting surrounded by the follicular cells, and together this structure, it is called as the primordial follicle. Okay, together this structure, it is called as the प्राइमोर्डियल फॉलिकल. तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल गाइस, इट इज प्राइमरी oocyte which is getting surrounded by the flat follicular cells of the ovary. Okay, these are the flat follicular cells of the ovary. Now from this, now again what will happen, it will, this primordial follicle will now change into primary follicle. Now this will change into primary follicle. Primary follicle. Okay, primary follicle. Now what is it guys? Now you already know, we have, again I will use the same color code, and I would advise everyone to use the same color code. Screen is not clear, beta, from my side the screen is very much clear. Please check at your end as well. Hmm. Beta, just give me a thumbs up that I hope the screen is clear to rest everyone, because from my side there is no issues as such. So yeah. Yeah, it is clear, beta. Nitin, Garima, everyone is saying it's clear. Clear, guys. Perfect. Hmm. क्लियर है बेटा, एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर लो. या ओके. नाउ ठीक, ऑडियो विजुअल्स क्लियर है. अब प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखो बेटा कैसा हो. वी अगेन हैव दिस पर्टिकुलर oocyte, और ये जो oocyte है दैट इज द, you already know this is the primary oocyte. Now this primary oocyte, it is getting surrounded by, now this follicular cells will change their shape and will become cuboidal. Okay, these cells will now become cuboidal. पहले flat थे और अब ये क्या बन जाएंगे, cube like. Okay, they will become cube like. So yeah, I cannot draw it in 2D, but yes, I'm just trying to show you that what is the difference between the primordial follicle and the primary follicle. The primary follicle will, again, this whole structure guys, it is, yeah, this whole structure, it is, yeah, we have the cuboidal follicular cells. Okay, these are the cuboidal follicular cells, and this whole structure, cuboidal follicular cells plus the primary oocyte, it is called as the primary follicle. Primary follicle. Okay, primary follicle. Now from the primary follicle guys, what will be formed? Secondary follicle. Secondary follicle. Now what will happen? Again, in the inside part we will have primary oocyte. This is primary oocyte. Okay, primary oocyte. Now this primary oocyte, it is getting surrounded by
again, these follicular cells will give rise to granulosa cells, and these granulosa cells will be, now there was only single layer in primordial follicle and in the primary follicle also, सिर्फ एक single layer थी. Now there will be 2-3 layers, okay, and these cells are given special names, and that is called as the granulosa cells of the ovary. Okay, these are called as the granulosa cells. So you just have to draw like 2-3 layers above it. Now these follicular cells will give rise to these granulosa cells, right? These granulosa cells, yes, these are the granulosa cells. और ये actual में क्या है? Follicular cells ही है. The follicular cells are differentiating into granulosa cells, and these are actually 2 to 3 layers. These are actually 2 to 3 layers, guys, right? These are actually 2 to 3 layers. So, and apart from that, some granulosa cells will become specialized. Okay, some granulosa cells will become specialized, and they will surround the outer part. Okay, they will surround the periphery, and they will be converted into a layer. Okay, and this layer, it is called as the theca layer. It is called as the theca layer. So theca layer भी किसका बना हुआ है? It is composed of follicular cells only. So it is composed of follicular cells only. It is composed of follicular cells only. So we have the primary oocyte. Okay, we have the primary oocyte. Now this primary oocyte is getting okay. Now it is on the periphery of the primary oocyte. Granulosa cells are arranged in 2 to 3 layers, and again the follicular cells at the outermost part will now convert into the theca layer. So secondary follicular is basically composed of the granulosa cells, the primary oocyte, and the theca layer. So this whole structure, it is called as the secondary follicle. Secondary follicle. तो अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है. प्राइमरी oocyte, it is composed by flat follicular cells of the ovary, single layer. Now primary follicle, it is follicular cells only, but the shape has changed from flat to cuboidal. Now secondary follicles will contain the primary oocyte, और जो क्या कहते हैं, the follicular cells है, they will give rise to the granulosa cells, and they will be arranged in 2 to 3 layers, and the outermost follicular cells will give rise to theca layer, right? So secondary follicle will be composed of primary oocyte, granulosa cells, and the theca layer, right? I hope this is clear up till now. Just give me a thumbs up, guys, that all are with me. Anushka, I'll just ask the technical team to go through it. I have, okay. Yeah, I hope it is clear, everyone. Garima, okay. Veer, Rutuja, very good. Krisma, very good. Yeah, very good, everyone. Salish, Tanvi, Dimple, Nitika, Nitin, yeah, Amir, Shiv, Ishraq, Dhanashri, Tanupriya, Aditya, very good. Okay, perfect. Perfect, guys. Kapil, Lakshita, Angel Matthews, very good. Okay, okay. Not a problem. Very good. Perfect. Perfect, guys. Now, this secondary follicle will now change into tertiary follicle. अब tertiary follicle का जो diagram है, I'll draw it on the other slide, right? I'll draw it on the other slide. Yeah. So now from the secondary follicle, what will be formed? Tertiary follicle. Tertiary follicle. Right? Tertiary follicle. Yeah. So let me just draw it over here only. Okay. Now in the tertiary follicle, guys, remember, अब दोबारा से वही डायग्राम देखेंगे हम लोग पहले. So remember that in the tertiary follicle we have this, the primary oocyte will now get converted into secondary oocyte. तो मैंने आप लोग को बताया था primary oocyte is getting converted into secondary oocyte. This particular step, it is called as what? Type in the chat box, guys, if you have started the session yesterday, if you have like participated in the lecture yesterday. From the primary oocyte, the secondary oocyte is released. This step is called as, चलिए आंसर दीजिए फटाफट.
देखते हैं किसको पता है, किसको याद है। Yes, Shravani, very good. It's ovulation. Nikinder Reddy, very good. Ovulation. Kapil, ovulation. Anushka, ovulation. Very good, guys. It is ovulation. Now, guys, the secondary oocyte will change into secondary. Sorry, the primary oocyte will change into secondary oocyte. So I'll label the diagrams later. Yeah. Now, hmm. Yes, everyone is right. Everyone is right. The secondary, yeah. Now, this secondary oocyte will be, okay, now covered with a layer, and that layer, can you tell me the name of that layer, anyone? This layer will be called as the zona pellucida. Now, this layer that is covering the secondary oocyte, okay, this is zona pellucida. So, yes. So, this layer, it is the zona pellucida. Right, this is zona pellucida. Yes, very good. And the red one, okay, just let mark it as well. Yeah, so yeah, this red one will be the secondary oocyte. So release of secondary oocyte from the primary one, it is called as the ovulation. अब ध्यान से देखो, अब secondary oocyte के बाहर क्या था? Zona pellucida we will discuss in detail. It is a glycoprotein layer. तो अभी हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे, so no need to worry. और इसके बाहर क्या थे? ग्रैन्युलोसा सेल्स थे. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे ना, ग्रैन्युलोसा सेल्स बेसिकली दे आर रिलीजिंग सर्टेन सब्सटेंस. ओके, कुछ जेली लाइक सब्सटेंस वो लोग रिलीज कर रहे हैं. ठीक है, सो दे आर रिलीजिंग सर्टेन सब्सटेंस. एंड अब मुझे आप एक बात बताइए, इफ दे आर रिलीजिंग समथिंग, तो ये सेल्स है आपस में चिपके हुए हैं, बट व्हेन दे स्टार्ट टू रिलीज सम secretory substances, what will happen? Again there will be space that will be formed between cells. Okay, so there is a cavity which is formed, guys. Okay, there is a cavity which is formed due to the secretions by the granulosa cells. And this cavity, guys, this cavity, it is called as the antrum. Okay, this cavity, it is called as the antrum. Okay, so yes, this cavity, it is called as the antrum. Now, can anyone tell me which fluid is present in the antrum? Can anyone tell me which fluid is present in the antrum, guys? और ये antrum एक fluid filled cavity है. Yeah, antrum ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So it is actually containing one liquid that is called as the liquid folliculi. Folliculi. Yes, liquid folliculi. Right, 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 right. Yes, liquid folliculi. Hmm. Okay. Now, yes, follicular fluid. Yes, it can be the same. Yeah, it can be the follicular fluid, right? Now, guys, remember that, okay, आउटर मोस्ट लेयर क्या थी? आउटर मोस्ट लेयर क्या थी? आप लोग को पता है कि आउटर मोस्ट लेयर हम लोगों ने क्या बनाई थी? थीका लेयर. अब ये जो थीका लेयर है बेटा, इट विल अगेन डिवाइडेड इनटू two I would say layers, theca interna and theca externa. Yes, it will be divided into two layers, that is the theca interna and theca externa. So again I will just try to draw it. Yeah, use the color. Yes, this one. So remember that this is the theca layer will get differentiated into two layers, guys. One will be theca interna and the other one will be theca externa. So we have theca interna and the outer one will be थीका एक्सटर्ना. जो थीका वाली लेयर थी ना, जो ग्रैन्युलोसस जो फॉलिकुलर सेल से डेवलप हुई थी, द आउटर मोस्ट लेयर, इट विल अगेन डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. राइट. हाँ, रविंदर पूछे, वेरी गुड बेटा. अब
अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है कि अब आपको सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन सी सेल्स प्रेजेंट थी, फटाफट से बताओ। वो सेल्स तो मैंने बनाई नहीं है अभी तक डायग्राम में। चलो फटाफट से बताओ, सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन सी सेल्स अभी हम लोग बना रहे थे अभी तक। आई एम यूजिंग द सेम कलर कोडिंग गाइस, राइट? हाँ, yes, granulosa cells, हाँ, follicular cells ही that give rise to granulosa cells. तो granulosa cells, okay. Now the granulosa cells which is surrounding, now the granulosa cells which is surrounding the secondary oocyte, guys, the granulosa cells which is surrounding the secondary oocyte, this is actually called as, okay, can anyone name it? It is called as cumulus oophoricus. It is called as cumulus oophoricus. Cumulus oophoricus. एक्चुअल में ये क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स ही है, ओके। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स आर प्रेजेंट, बट स्पेशली द ग्रैन्युलोसा सेल्स which are surrounding the ovary right now, okay, these are called as, they are given a special name, that is cumulus oophoricus, okay. तो ये पूरा का पूरा ग्रैन्युलोसा सेल्स है एंड दे हैव जस्ट क्रिएटेड एन एंट्रम। बेसिकली इन्हीं ग्रैन्युलोसा सेल से सिक्रीशंस निकलते हैं एंड दैट इज समथिंग, okay, a fluid filled cavity, right? A fluid filled cavity, and that is the liquid follicle, okay. Now this granulosa cells, some granulosa cells will be actually attached to the outer membrane, okay, attached to the theca interna, and this is given a new name, okay, which is helping the zone, like secondary oocyte to attach to the membrane, because fluid itna sara tha that the secondary oocyte is pushed to one corner, okay, and it is just acting like a stalk जो secondary oocyte को connect कर रहा है the theca membrane से. And remember guys, the one which is helping it to connect, okay. hmm. Yeah, it is the germ hill वाला part, germ hill वाला part, okay. इसको जर्म हिल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इट इज जस्ट द लेयर ऑफ दीज सेल्स व्हिच हेल्प इन कनेक्शन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, या नॉट अ सिंगल लेयर बेटा, इट इज टू लेयर्स, थोड़ा सा स्पेस नहीं था, अदरवाइज इट कैन बी लाइक मल्टीपल लेयर्स आल्सो, राइट? जस्ट बिटवीन द cavity and the oocyte. Oocyte is actually pushed to one of the corners, right? मतलब whenever I'm adding this germ hill and the cumulus oophoricus beta, तो ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। उससे पहले ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल है। आई जस्ट ड्रॉन इट इन वन पर्टिकुलर डायग्राम, ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एज वेल। सो रिमेंबर, जब तक क्यूमुलस oophoricus नहीं है, germ hill नहीं है, it is the tertiary follicle, and whenever it gets converted into like the specialized cells, so these cumulus oophoricus and the germ hill, they will be now called as the mature graphian follicle. I hope this particular it is clear to everyone, okay. And these follicular cells will later on give rise to the corpus luteum, okay, and the corpus luteum degenerates, okay. So I hope this particular diagrams are clear to everyone, right? वो टर्शरी फॉलिकल था, उसी में अगर क्यूमुलस oophoricus और वो ऐड हो जाएगा तो it will again become that particular part. So yes, just give me a thumbs up guys that everything is clear so that I can start with the next topic, that is the structure of the secondary oocyte. Yes, Ravinder Butcher says everything is clear. Okay. What about rest guys? Hmm. Okay, perfect. Tanvi, Garima, Rutuja, Tanu, Nitika, Selesh. Okay. Everyone is like perfectly fine. Okay, okay guys, perfect guys. Now guys, structure of the secondary oocyte, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेंगे, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिख पास, पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इज अगेन असेंशियल पार्ट बेटा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, you cannot like, so remember guys that, yeah, now in the secondary oocyte, remember that, yes,
in the secondary oocyte, remember that this is the secondary oocyte, and the nucleus of the secondary oocyte, it is at one side. Okay, it is also called as the germinal vesicle. Okay, so if I just try to mention the nucleus, okay, so let us suppose this is the nucleus of the secondary oocyte. Okay, just label it, it is nucleus. And remember that the okay, what is the cytoplasm of the secondary oocyte be called as? What is the special name given to the cytoplasm of the secondary oocyte? Anyone who would like to answer? Yeah, sure. So yes, the fluid that is like present. Hmm, hmm. Answers नहीं दे रहे हो, क्या हो गया सबको? Try to answer, guys. Yes, it is ooplasm. So yes, whatever fluid is like present inside, it is given the cytoplasm of the secondary oocyte. It is given a special name that is called as the ooplasm. Ooplasm. Yes, ooplasm. Okay, what is the membrane of the oocyte called as, guys? Now, membrane of the oocyte called as. Okay. Yes. Hmm. What? Okay. इसी से आप फटाफट से मेम्ब्रेन का नाम बताओ क्या होगा? चलो, I want to know if you guys know it or not. Yes, perfect. Ulema, very good, very good. Yes. So this black color which I have drawn, guys. Yes. Okay. Okay, I cannot locate my cursor. Hmm. Yeah, this is ulema. Yes, everyone is right. This is the ulema, guys. It is ulema. देखो, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ओप्लाज्म बोलेंगे, जो आउटर की मेम्ब्रेन होंगी, इट इज कॉल्ड एज द उलेमा. ओके, नाउ ओप्लाज्म की एक बात रखिएगा, इट इज डिवॉइड ऑफ द व्हाट वी से ओप्लाज्म, बेसिकली इट इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रियोल्स, राइट? एंड to the ulema, basically, okay, a membrane is surrounding the ulema, and that is called as the vitelline membrane. Okay. Okay, so yes, Jani Alam, good morning. Yes. So, hmm. So this is actually the vitelline membrane. If I just try to draw it, yeah, it is, yeah, it is the vitelline membrane. Now, can anyone tell me what is the space that is present between the vitelline membrane and the ulema? Can anyone tell me what is the space? Yes, Tanupriya, it is right. It is the perivitelline space. Very good, guys. Vita. Very good. I'm like happy that you guys are answering it. So it is the perivitelline space. That is the space present between the vitelline membrane and the ulema. Perivitelline space. It is the perivitelline space. Right. Now, guys. Okay. Now, can you tell me where is the first polar body present? Can you tell me in the whole structure where is the first polar body which is present? Yes, anyone? Can anyone tell me where is the first polar body present? The answer is again in front of you. Yes. No, beta. Hmm. Yes, it is in the perivitelline space, guys. It is the first polar body which is present over here. First polar body which is present in the perivitelline space. This is again an important question, guys. So just mark it over here. Dollar लगा लो इसके ऊपर.
So yeah, perivitelline space, it is the space that is present between the vitelline membrane and the oolemma. Okay, and yeah, it is it consists of the first polar body. आपको पता है ना secondary oocyte के साथ yeah, there will be the release of the first polar body, right? अब मुझे एक बात बताइए, what okay, which structure is surrounding the oocyte completely, secondary oocyte completely? अभी उस लेयर का मैंने नाम बताया था आप लोगों को. Yes, can anyone tell me the name of that layer? Hmm. Yes, it is the zona pellucida. I'll just try to draw it. Yeah, we have the zona pellucida, which is just surrounding this particular layer. So it is the zona pellucida. और zona pellucida के बाहर कौन से cells present थे? What are the cells which were present outside the zona pellucida? Yes, Anshika, Nitin, Tanu, it's very good. What were the cells that were present outside the zona pellucida, guys? Yes, follicular cells, or I can say simply the, yeah, granulosa cells were present. Yes. So these granulosa cells which are present outside, guys, these granulosa cells which are present outside, they are arranged in a sun ray like pattern. Okay, they are arranged in a sun ray like pattern. That's why these are given a special name that is called as corona radiata. These are given a special name that is called as the corona radiata. These are given a special name that is called as the corona radiata. Right, guys? I hope the structure is clear to everyone. Okay. This okay, so just summarizing it, nucleus hoga. We have the cytoplasm that is called as the ooplasm. We have the plasma membrane that is called as the oolemma. The oolemma, that is the plasma membrane, it is surrounded by the vitelline membrane, and the space present between the oolemma and the vitelline membrane, it is the perivitelline space where the first polar body will be present. And outside the vitelline membrane, what we have zona pellucida, to which the granulosa cells are arranged in a sunray like pattern. That's why it is called as corona radiata. It is called as corona radiata. I hope this particular structure is clear to everyone. So just give me a thumbs up, guys, if both the topics, the follicular cells ka arrangement and this, what we say is the structure of the secondary oocyte, is clear to everyone. Dhanashri, Nitika, very good. वेरी गुड गाइस, परफेक्ट परफेक्ट. तो डायग्राम्स तो बनाने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है. नितिका, तनु, ऋतुजा, एंजल, अंशिका, प्रिस्मा, गरिमा, अविका, तन्वी, ऋतिका, इशिता, नितिन, श्रावणी, वीर. ओके, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट. चलो, चलिए. तो नेक्स्ट, let's move on to the next topic, the events which are leading to the fertilization. Again, I will not make you write thesis. इसमें हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. फ्लो चार्ट और डायग्राम से काम आसान हो जाता है. I personally believe drawing diagrams and drawing flow charts makes the works very easier. तो कम रेक्टिफाई करना पड़ता है और इसको समझने, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग लिखेंगे, लिखते जाइए साथ साथ. सो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, द वेरी फेमस स्टेप दैट इज द इजैकुलेशन. Ejaculation into female genital tract. फीमेल जेनाइटल ट्रैक. तो इजैकुलेशन कहां हो रहा है, वेजाइना में. ओके, इजैकुलेशन कहां हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद द मेल स्पर्म विल गो इनटू वेजाइना, राइट. Now, ejaculation into the female genital tract, what will happen? The sperms will go, okay, from vagina. Around 2 million sperms will enter the cervix. Okay, so remember that around 2 million sperms enter cervix.
Around the 2 million sperms will enter the cervix. Now, from while entering into the cervix, they will undergo a process that is called as capacitation. मैंने पहले ही बताया था capacitation जो है वो कहाँ होता है? Female genital tract. And which part of the female genital tract? It is the cervix. Capacitation में क्या होता है? Sperms will become what? Sperms will become what? Answer in the chat box. Capacitation में बताओ sperms will become. तो इसका अगला स्टेप वही है, sperm become hyper motile. Yes, Anushka, Dhanashree, Shravani, Pramendra, Kriti, Tanu, very good. It becomes hyper motile. Sperm becomes hyper motile. Okay, now where does the fertilization take place? In which part of the female genital tract? Fallopian tube. तो आपको पता ही है ना ये चीज. तो फॉर एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो वी हैव, okay, this fallopian tube is there. This is the body of I mean the uterus, and from the uterus we have the cervix, और फिर क्या आ जाता है? वेजाइना. तो वेजाइना से कहाँ गया? सर्विक्स में. सर्विक्स से इट विल गो इनटू द यूट्रस, आई मीन इट विल गो टू द सर्विक्स में. हाइपरमोटाइल होने के बाद इट विल रीच द fallopian tube, right? It will reach the fallopian tube where the fertilization will take place. Yes, isthmic ampullary junction. Yes guys, it is, yeah, isthmus नहीं है राजसोनी, again books में ना updated नहीं है, ampullary isthmic junction है. So I will again mention this point, so don't worry regarding that. Yeah, तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग चलना है. स्पर्म्स बिकम हाइपरमोटाइल. ओके, द स्पर्म्स रीच fallopian tube. The sperms reach fallopian tube, and these sperms are around 300 to 500. They reach the fallopian tube, and these number is like from 300 to 500, right? From 300 to 500. Now, apart from that, guys, sperms will now reattach to corona radiata. अब secondary oocyte का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर देखो, corona radiata है. Basically, the granulosa cells are attached, arranged in a sunray like pattern. तो उसी को हम लोग corona radiata बोलते हैं. ठीक है? So yes, now the sperms basically they attach to corona radiata. Sperms attach to corona radiata. और इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे. आई डोंट हैव स्पेस, सो आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यू प्लीज कंटिन्यू द सेम फ्लो चार्ट, राइट? यू कंटिन्यू द सेम फ्लो चार्ट. Sperms attached to the corona radiata, right? And they form the, oh sorry, and from the acrosomal cap, which enzyme will be released, guys? And from the acrosomal cap, tell me which enzyme will be released. And from the acrosomal cap of sperm, yes, Shravani, Anushka, very good. And from the acrosomal cap, Ravinder, very good. And from the acrosomal cap of sperm, hyaluronidase is released, okay, which dissolves the corona radiata. Which dissolves the corona radiata. Which dissolves the corona radiata. Okay. Now, corona radiata के बाद कौन सा structure? You already know we have the zona pellucida. So write that out of 300 to 500 sperms, only one sperm attaches to ZP3 receptor. जोना पेल्यूसिडा के ऊपर 3 रिसेप्टर्स होते हैं. ओके, बेसिकली इट हैज ZP1, ZP2 एंड ZP3 receptor, and out of these
Three receptors. It is the ZP3 receptor through which the corona radiata is attached, right? So, yes, ZP3 receptor of zona pellucida. So, zona pellucida has how many receptors? Three receptors, right? So, you can again mention this. Zona pellucida has ZP1, ZP2, and ZP3 receptors. Okay, zona pellucida has ZP1, ZP2, and ZP3 receptors. Okay, now अब sperms कहाँ आ जाएंगे बताओ. Zona pellucida penetrate करने के बाद the sperms will come into the perivitelline space, right? Will dissolve, yeah, the vitelline membrane also, and now it will get entry into the perivitelline space. Sperms get entry into the perivitelline space. We'll come to that, don't worry. Perivitelline space. Now, when the sperms get into the perivitelline space, remember guys, when the sperms get entry into the perivitelline space, what will happen? The meiosis 2 will be completed. And meiosis 2 is completed only when? Now tell me, meiosis 2 is completed only when? At what time the meiosis 2 gets completed? I have already discussed it yesterday. Meiosis 2 will only get completed at the time of Anushka. Yes, write down. Thanishri, very good. Right. It is at the time of fertilization. At the time of fertilization. Okay. Now, this is at the time of fertilization, it is getting completed. Now, what will happen? The head of the sperm attaches to oocyte, membrane, और oocyte membrane को हम लोग एक बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, that is called as the oolemma. Okay. Yes, very good, everyone is answering. Now what will happen? Some cortical granules will release the cortical enzymes. So the cortical granules release cortical enzymes, and these cortical enzymes make zona pellucida thick, or I can say it makes hard zona pellucida hard, okay, and inhibits the entry of other sperms, inhibits the entry of other sperms. It inhibits the entry of the other sperms, right? I hope till now this particular flowchart is clear, that ejaculation into the female genital tract after the during the sexual intercourse, ejaculation goes from the vagina to the cervix, and around 2 million sperms enter the cervix. Capacitation takes place. Capacitation basically means, yes, I will come to the functions also, Shraddhanjali. Yeah, capacitation means the sperms will become hypermotile. The sperms reach the fallopian tube, and what is the number reaching the fallopian tube? It is around 300 to 500 sperms attached to the corona radiata. Obviously बात है corona radiata पे पहले आएगा, फिर वो कहाँ पर जाएगा? It will come to the zona pellucida. Okay, corona radiata को basically dissolve करेगा. How? With the help of which enzyme? It is hyaluronidase. Okay, and it will attach to the receptor at ZP3. It will get into the perivitelline space. Meiosis 2 gets completed at the time of fertilization, and the head of the sperm will attach to the oocyte membrane. Okay, and after that, certain cortical enzymes will be released by the cortical granules, which will make the zona pellucida hard, and it will inhibit the entry of the other sperms. It will
inhibit the entry of the other sperms, right? I hope this is clear to each and everyone over here. So फटाफट से एक thumbs up दे दो कि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक. Just give me a thumbs up, guys, that everything is clear up till now, right? So that I can start with the next topic. We have discussed three topics today as per events leading to fertilization, structure of secondary oocyte, and structure in the development of the follicle, right? Yes. आ गया समझ में सर श्रावणी. ओके. Sure. Now, very important topic from the exam point of view. It is first week development, that is fertilization and implantation. फर्स्ट वीक डेवलपमेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. अभी तक बच्चे आप लोगों ने सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पढ़ा है. अब हम यहाँ से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और सिर्फ एक एक डायग्राम में हम लोग उस चीज को पूरा समझने की कोशिश करेंगे. आई विल ड्रॉ डायग्राम फॉर यू गाइस टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, राइट, टू मेक इट मोर क्लियर so you can visualize and learn better, right? So it's better if you draw the diagram with me, okay, right? So let's start with this particular topic, very important from the exam point of view. जो भी 4 वीक्स का डेवलपमेंट है, फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होती है, वो कैसे होती है. सो विल जस्ट लुक एट द पिक्चर ओवर हियर. बट बिफोर दैट गाइस, रिमेंबर, थोड़ा सा अगर मैं इसको बेसिक आप लोग को बताने की कोशिश करूं, यू गाइस शुड नो कि अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात की जाए, बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, और आई कैन से सिंपली से मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम एज्यूम करके चलते हैं कि इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम एज्यूम करके चले तो इट इज अप्रोक्सीमेटली या अराउंड 28 डेज. ये प्रिजम्पशंस हैं हम जो गायनेकोलॉजी में या ऑप्स में लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग मान के चलते हैं इट विल बी अराउंड फॉर 28 डेज, राइट. और इसी 28th डे में जो 14th डे होता है उस पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन होता है विच इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन, ओके. तो ये प्रिजम्पशन है कि जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उसी दिन फर्टिलाइजेशन भी होगा. एंड ओव्यूलेशन इज जस्ट 14 डेज बैक फ्रॉम दीज 28 डेज. LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब 28 डेज का है, तो 28 में से 14 माइनस करोगे तो व्हाट इट विल बी, 14 ओनली. So on the 14th day the ovulation will take place or the fertilization will take place. Okay, it is 14 days. Fertilization कब होता है? It is just 14 days before the last menstrual period. चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. If the menstrual cycle it is of suppose 32 days, तो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, इसमें ओव्यूलेशन कब होगा. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज ऑफ 32 days, so when will the fertilization or the ovulation will take place? चलो देखते हैं. हम्म 32 में से 14 माइनस करो, कितना हो जाएगा. फन मोड 16 क्यों होगा बेटा, नहीं, हाफ डे पे नहीं होता, नहीं. यही चीज आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट फॉर एवरीवन. कृति ने आंसर सही दिया है. पंकज तो ध्यान से लेक्चर सुनो. हाँ बेटा, अगर 28 डेज की साइकिल है, अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रिमेंबर 14th डे पर ही ओव्यूलेशन होगा और प्लस फर्टिलाइजेशन होगा. लास्ट का 14 डेज आर फिक्स्ड. 14 डेज आर फिक्स्ड. 14 डेज आर फिक्स्ड. अगर 32 डेज की साइकिल है तो 32 में से 14 माइनस करोगे, क्योंकि 14 डेज लास्ट के फिक्स हो सकते हैं. स्टार्टिंग के डे 0 से वो वेरी करते हैं, बट लास्ट के 14 डेज आर मतलब दे आर फिक्स्ड. तो अब 32 में से 14 करोगे तो यस इट विल बी 18th डे. इट विल बी 18th डे. तो ये
कंसेप्ट माइंड में रखना है। चलो आप मुझे बता दो, अगर 40 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा? इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ व्हाट आई से लाइक 40 डेज, तो व्हेन विल द ओव्यूलेशन और द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? 36 नहीं बेटा, ऋतुजा -14 करेंगे। हाँ, तुमने गलती से टाइप कर दिया मुझे लग रहा है। यस, yes, it will be the 26th day beta where the last के 14 days are fixed, right? चलो ये कंसेप्ट मुझे क्लियर करना था सब लोगों का। यस, ये कंसेप्ट मुझे क्लियर करना था सब लोगों का। हम्म, हाँ चलो, अब इतना क्लियर हो गया माइंड में तो बस ठीक है। तो ये चीज आप लिख लेना शॉर्टकट में, ठीक है? उतने कोई थीसिस नहीं लिखने है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया है। और अब आ जाते हैं मेजर डायग्राम पे, और इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गायनिक के भी पॉइंट्स कवर होंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हैं हम लोग सब कुछ। तो यस, एम्ब्रियोलॉजी तो कवर होगी ही होगी। चलिए डायग्राम बनाएंगे पहले। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द यूट्रस फर्स्ट। I will draw a very big diagram, guys, and I ask everyone to draw the diagram big only. Okay, the big diagram. Now, I'm taking only one side of the fallopian tube. Okay, I'm just taking only one side. So yes, only one side you have to take. So this is the female. Okay, the female genital tract. Basically you can have the uterus over here. Yes, this is the uterus. फेलोपियन ट्यूब हो गया ये, ठीक है? अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर किस साइट पर आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगी? व्हाट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन गाइस? तो यस, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया था, इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। ओके, दैट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, राइट? यस। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, now remember that for example suppose this is the secondary oocyte. Okay, this is the secondary oocyte, and इस secondary oocyte को fertilize करने के लिए we have one sperm over here. Okay, so this is something which is called as fertilization. Okay, now what will happen as a result of fertilization? Basically a zygote will be formed. A zygote will be formed, right? What will happen as a result of fertilization? A zygote will be formed. The female pronucleus, okay, and the male pronucleus will fuse with each other, and you already know, yes, this zygote will be again surrounded by a layer of zona pellucida. Okay, this is again surrounded by a layer of zona pellucida. It is the first week development I'm showing you guys with the help of a very simple diagram. So remember guys that this is the zona pellucida, and this red one guys, this red one, it is the zygote, right? This red one is the zygote. अब मुझसे सब लोग कहेंगे कि एवरीवन विल से कि सर जाइगोट तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो आपने दो कैसे दिखाए हुए हैं सेल? नाउ गाइस अगेन देयर इज अ कैच ओवर हियर गाइस। ओके, नाउ रिमेंबर गाइस, इन ह्यूमंस स्पेशली वी नेवर हैड अ सिंगल सेल स्टेज, बिकॉज जब मेल pronuclei fuses with the female pronuclei, okay, before fusion only the cleavage, the division starts to begin. So kabhi single cell stage to aati nahi hai, okay, it is just mentioned in the books. Okay, so you have to be, abhi jo naye theory ya journals aate hain usme it's very much clear ki before the male and the female pronucleus starts to know like come into a single cell stage, usse pehle hi cleavage start ho jati hai. So yes,
So zygote always means a single cell layer, but again the concept varies because you already know we have the male pronucleus and the female pronucleus, and before they come together and make a single cell, before the fusion only the cleavage starts to begin, and that's why over here I've just shown you this, right? So yes, now zona pellucida, the zona pellucida guys, remember it is a glycoprotein shell. मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को, it is a glycoprotein shell, okay, and it prevents polyspermy. polyspermy अभी बताया था, it does not allow the other sperms to enter, right? And one more important function that has been asked in the exam, that it prevents ectopic pregnancy. It prevents the ectopic pregnancy. It prevents the ectopic pregnancy. अब ectopic pregnancy क्या होती है, पहले देखो ectopic का मतलब होता है something unusual, okay, something which is not usual. अब normally जो zygote ये बन के तैयार हुआ है, normally this zygote will move where? Implantation कहाँ होती है, फटाफट से बताओ. Where does the implantation takes place, guys? Hmm. Yeah, implantation fallopian tube में कहाँ होगी बेटा? Implantation takes place on, yeah, it is the uterus. Implantation का normal site क्या होता है कि this particular thing will move into the zygote. अगर implantation it is occurring somewhere outside the uterus, it is called ectopic pregnancy. अगर ये zygote अंदर यूट्रस में मूव ही नहीं किया, अगर वहीं पर इम्प्लांट हो गया, तो fallopian tube is not the site for implantation. So that is something which is called as ectopic pregnancy. तो यहीं पर zygote डिवाइड होकर बड़ा होना शुरू हो जाएगा. So that is something yeah, so that is something which is called as, yes, any site other than the uterus, it is ectopic, unusual site. It can be fallopian tube, it can be what we say ovaries also, okay, or it can be anywhere, okay. So apart from the uterus, any site where the pregnancy will take place, that is called as the ectopic pregnancy, right? So it helps in preventing the ectopic pregnancy also, and that is one of the important questions that you have to remember. तो इस पे डॉलर लगा लेना. अब तो ये सब लोगों को पता चल गया है कि from the zygote, now what will happen? The cleavage will take place. The cleavage will take place, or the cleavage will take place. Again, use the same color code, guys, वरना confuse हो जाओगे बाद में. So I'm using green color for the zona pellucida, okay, and we have multiple cells, okay, from the zygote that will be formed. Multiple cells, yeah, it can be yeah, any cavity apart from that, or even it can be जो स्कार होता है ना सिवेरियन सेक्शन में, जो स्कार दिया जाता है उस पे भी हो सकता है, राइट? सो या इट वैरीज. जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ोगे, आई हैव माय वीडियो आल्सो, आई विल शेयर इट विद यू ऑन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इफ यू आर like so much interested, you can go through that video as well. So remember guys कि अब इसमें क्या हो जाएंगे, ये सेल्स डिवाइड करेंगे अंदर ही अंदर, एंड या so this is called as the morula, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्यूला. अच्छा, मोर्यूला का सेल स्टेज क्या होगा, फटाफट से बताइए. मोर्यूला का सेल स्टेज क्या होगा? मोर्यूला इज 8 to 16 celled stage.
और जोना पेल्यूसिडा को आई एम नॉट राइटिंग जोना पेल्यूसिडा अगेन एंड अगेन, सो जस्ट रिमेंबर यस 8 to 32 नहीं है बेटा, उसको 32 वाला कंसेप्ट भी अभी क्लियर करता हूं मैं। आई जस्ट क्लियर द 32 वाला कंसेप्ट आल्सो, उसको एडवांस मॉड्यूला बोलते हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे। या इट इज द 18 to 16 सेल स्टेज और इसको जोना पेल्यूसिडा है, ठीक है, और जेड से लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर, दिस मॉड्यूला, ओके, will now enter into the uterine cavity। ये यूट्रस है ना पूरा, तो ये यूट्राइन कैविटी है, तो दिस इज द यूट्राइन कैविटी, मैं साइड में लिख रहा हूं। सो ये एंटर करता है ऑन डे 4, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन डे 4, okay, it enters the uterine cavity, it enters the uterine cavity। Now again I have a question guys to everyone over here, again I have a question कि अब suppose the fertilization is taking place on 20th day, what will be the day when the morula will enter into the uterine cavity? Sure. I also see कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अगर fertilization 20th को हुआ है, so what will be the day when the morula will enter into the uterine cavity? Yes, it will be 24th। अनुप्रिया, डिम्पल, वेरी गुड। श्रद्धांजलि बेटा 28 कैसे होगा? आप खुद देखो ना, अगर हम फर्टिलाइजेशन को डे 1 मान रहे हैं, ठीक है, सो अगेन इट विल बी लाइक द 4th डे, हाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू डिलीट द कमेंट्स, इट्स ओके इफ इट्स रॉन्ग आल्सो। तभी मैंने वो कंसेप्ट दिया था, लास्ट के 14 डेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। जानिया आलम, आयुष, ओके, कपिल, श्रद्धांजलि, ओके ओके गाइस, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ ठीक है, तो इट विल एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी। नाउ it will develop into the advanced or late morula, advanced or late morula। advanced or late morula को, okay, there is a question also, I'll discuss that question also which was asked in the exam। It's a very simple question। Now advanced or late morula, it is basically a 32 celled stage, okay, it is a basically 32 celled stage। yes, yes guys, yes beta, entry it will be in the form of advanced or late morula only, right? And later on it forms the blastocyst, and blastocyst is the attachment or the stage of implantation, okay, stage of entering नहीं है बेटा, stage of implantation है, ठीक है। चलो अभी भी वो देख लेते हैं, don't worry about it, okay। Now the outermost layer guys, you already know we have the zona pellucida, ओके, तो मैंने उसको ग्रीन से बना रखा है, तो वी हैव द जोना पेल्यूसिडा आउटसाइड, राइट, वी हैव द जोना पेल्यूसिडा। नाउ द रेड cells which I have drawn, okay, these cells will differentiate into, okay, the outer cell mass, okay, and these cells will differentiate into a layer, okay, that will just surround the zona pellucida, and this is called as the outer cell layer। They will differentiate into two. These are called as the outer cell mass. They are actually aligned along the periphery, and some cells, okay, the some cells will be inside in the form of clusters. Okay, so this is called as the inner cell mass. Inner cell mass. So remember, guys, yes, inner cell mass. Now, what will happen after this process? Zonal hatching will take place. After this, zonal hatching will take place. Okay,
zonal hatching will take place. Okay, and what will happen, the zona pellucida will get dissolved. Okay, the zona pellucida will get dissolved, right? So yeah, just to show that I will use the same color code. Yes, I will use the same color code. Yes, the zona pellucida will get dissolved, and the as the zona pellucida will get dissolved, beta, what will happen, the fluid inside the uterine cavity will enter. अभी जोना पेरिसेटा क्या था, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन था, वो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड था उसको अंदर नहीं आने दे रहा था. नाउ इट विल परमिट द एंट्री ऑफ द यूट्राइन फ्लूइड. ओके, क्योंकि जोना पेरिसेटा तो डिसॉल्व हो गया, तो अब क्या होगा कि देयर विल बी अ फ्लूइड व्हिच विल कम इनसाइड, राइट, देयर विल बी अ फ्लूइड व्हिच विल कम इनसाइड. तो पहले तो आउटर सेल मास बना लो. Okay, the fluid will now come inside from the uterus, and the inner cell mass will be pushed to one side. Yes, the inner cell mass will be pushed to one side, resulting in the formation of a cavity. Okay, a seal. Okay, that is something. This structure it is called as the blastocyst. इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. सो यस, देखो सिस्ट है ना, बेसिकली वन विद कैविटी और सील. इट इज वन विद कैविटी और सील. वन विद कैविटी और सील. यस. So now blastocyst, beta, Pankaj, blastocyst is the site or the stage for, not the site, it is the stage for implantation. Okay, so yes, अब क्या हुआ, जोना पेलिसिटा डिसॉल्व हुई, जोनल हैचिंग हुई, जोना पेलिसिटा की लेयर टूटी, द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द यूट्रस विल कम. Okay, it will now have the entry to go inside, and what will happen due to this, the inner cell mass will be pushed to one side, resulting in the formation of a cavity or a seal, a fluid filled cavity, and this is structure, okay, is called as the blastocyst. This structure it is called as the blastocyst. So remember guys that you already know this is the zona pellucida hatching. Okay, the red one it is the outer cell membrane, blue one it is the inner cell mass, outer cell mass, inner cell mass, and this is the blastocele. This cavity it is the blastocele. Okay, because the uterine fluid gets filled over here. Okay, so now guys tell me, did you understand this particular concept? Then I will discuss more points regarding blastocyst. तो पहला था फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के पास मोरुला स्टेज आई, देन वी हैव द एडवांस मोरुला, ओके, और द लेट मोरुला, ओके, where the cell differentiates into the outer cell mass and the inner cell mass. और फिर zonal hatching के बाद the uterine fluid goes inside, or that basically resulting in the form of a cavity. That structure it is called as the blastocyst. I hope this is the, yes. गरिमा, फनमोट, पंकज, क्रिस्मा, तनु, जेसिता, अंशिका, पीयूष, अविका, महफूज, लक्षिता, अनुष्का. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. चल, बाकी भी रिप्लाई कर दिया करो. तो ये क्लियर हो गया सब लोगों को. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलो, सब कह रहे क्लियर है, क्लियर है, ठीक है. चल, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. एक डायग्राम में मैंने सब कुछ समझा दिया है. अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे नोट्स में. ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग जरूर से ऐड करेंगे नोट्स में. तो ब्लास्टोसिस्ट, चलिए हेडिंग डाल दीजिए ब्लास्टोसिस्ट. अब जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं नोट्स के फॉर्म में.
Remember guys that blastocyst, it is the stage for implantation. It is the stage for implantation, right? अब ब्लास्टोसिस्ट ही स्टेज है जो इम्प्लांट करेगा इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, फटाफट से उन 3 वॉल्स के नाम बता दो. व्हाट आर द 3 वॉल्स ऑफ द यूट्रस? आई मीन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस आर नेम्ड एज, क्या क्या है, बाहर वाली, अंदर वाली, मिडिल वाली, जल्दी से नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ यार. नाउ द डे ऑफ इम्प्लांटेशन गाइस, इट इज डे 6. ओके, और D6 भी लिखा है मैंने, D6. एंट्री कौन से डे पे होती है? डे 4 पे, यूट्राइन कैविटी में. डे 6 विल बी द डे व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट विल, ओके, अटैच टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस. ओके, एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. वेरी गुड कृति, आविष्कार, पीयूष, अनुष्का, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, यस. हाँ, day of implantation, it is day 5, day 6, or okay. Now guys, I have a question for you. If the fertilization is taking place on day 18th, tell me when will the implantation take place? On which day the implantation will take place? चलो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए. फटाफट से इसका आंसर बताओ. अगर fertilization is happening on day 18, when will the implantation take place? कृति, श्रद्धांजलि बेटा, हाँ बिल्कुल, वेरी राइट. तनुप्रिया बेटा, 4th डे पे तो एंटर होगा. एंटरिंग की बात नहीं हो रही है, इम्प्लांट की बात हो रही है. इम्प्लांट होता है डे 6 पे. यस, इट इज 24. एवरीवन इज राइट. परफेक्ट, परफेक्ट गाइस. श्रद्धांजलि, फनमोट, कृति, इशिता, डिंपल, पीयूष, कृष्मा, आदित्य, श्रावणी, दारा, गरिमा, वेरी गुड गाइस. चलो, इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए. अब इम्प्लांटेशन कंप्लीट्स बाय डे 10. इम्प्लांटेशन कंप्लीट्स बाय डे 10. ठीक है, बीच में एक विंडो पीरियड भी आता है, दैट इज द 7 to 8 डे. ओके, नाउ कंप्लीट कहने का मतलब है इट इन्वेड्स द वॉल्स ऑफ द यूट्रस. ओके, इट इन्वेड्स द वॉल ऑफ द यूट्रस. द ब्लास्टोसिस्ट गोस डीप इनसाइड द एंडोमेट्रियम. ओके, सबसे अंदर वाली लेयर तो एंडोमेट्रियम ही होगी, फिर मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली वाली कौन सी हो जाएगी? पेरीमेट्रियम. राइट, सबसे बाहर वाली क्या हो जाएगी? पेरीमेट्रियम. Right? So yes, what is this type of implantation called as? The type of implantation, it is called as the interstitial implantation. Interstitial, okay, implantation. Everything will go. देखो और भी तरह के इम्प्लांटेशन होते हैं, ह्यूमंस में इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है. बेसिकली इफ यू जस्ट वांट टू राइट इन शॉर्ट, you should know that the blastocyst goes deep inside endometrium, deep inside endometrium to implant. The blastocyst goes deep inside the endometrium to implant. Site जहां पर implantation होती है, okay, the site where the implantation takes place. So remember the site where the implantation takes place, it is the junction, again, junction of posterior wall of fundus and body of uterus. Posterior wall of fundus and the body of the uterus. It is the junction of the, yes, posterior wall of the fundus. Fundus वो जो ऊपर वाला part है, fundus, and the posterior wall of the uterus. Okay. Now, again, in the fallopian tube, beta, there are 3 types of cells. Can anyone tell me what are the 3 types of cells that are present in the fallopian tube? Yes, इस पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हिस्टोलॉजी में भी काम आएगा. We have the secretory cells. Secretory cells. We have columnar cells. Okay, and we have the PEG cells. Okay, PEG cells का क्या फंक्शन होता है अभी तक नहीं पता. We don't know the function of the PEG cells. Yes,
egg cells होते हैं, but what is the function? Till now there is like no update on this. Secretory cells का function बहुत important है. Basically they provide nutrition to early zygote and in the form of pyruvate. In the form of pyruvate, they provide nutrition to the early zygote in the form of pyruvate. राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द अर्ली जाइगोट. ऑब्वियसली बात है, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे सेल्स होने चाहिए जो इसको एनर्जी दे, ठीक है. तो या कॉलमनार सेल्स का काम क्या होता है? तो दीज आर सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स. सिलिएटेड. अब गाइस नाउ इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे. Now guys, you already know, for example, this is the fallopian tube. Okay. Now guys, these columnar cells are containing cilia. अब इसका काम क्या होगा? It will allow the zygote to move inside the uterine cavity. Basically, two things are required for the movement of zygote into the uterine cavity. Uterine cavity, वो zygote के अपने पास तो legs है नहीं कि वो अपने आप उठ के चला जाए. So there are two things. Yes, helps in the movement. Okay. मेजॉरिटी इट इज द पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. तो फेलोपियन ट्यूब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है सो दैट द जाइगोट कैन मूव इनसाइड. ठीक है, मेजर तो वो काम है. बाकी सीलिया ऑल्सो, कॉलमनर सेल्स की जो सीलिया होती है वो भी हेल्प करती है जाइगोट को यूट्राइन कैविटी में मूव करने पे. ठीक है, अगर पेरिस्टाल्सिस ना हो और सीलिया इमोटाइल हो, it will result in what, guys? I want the answer. If the cilia is immotile and the peristalsis is not taking place, what will happen to the zygote? What will happen to the zygote? We have discussed this clinical situation right now. एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा, एक्टोपिक जाइगोट मूव ही नहीं करेगा तो वहीं प्लांट हो जाएगा ना. तो मूवमेंट के लिए ये कॉलमनर सेल्स की सीलिया भी जरूरी है. Yes, it is ectopic pregnancy. Very good, guys. It is the ectopic pregnancy. हाँ. यस आविष्कार, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये चीजें पता चल गई. अच्छा, इसमें दो तीन चीजें ना और मुझे जो ऐड करनी है. तो एक तो याद रखना कि स्पर्म में ना, मैं यहीं से ऐड कर देता हूँ. स्पर्म में ध्यान रखना, आप लोग अलग से लिख लेना, द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी. ये भी एक बार क्वेश्चन आया था. एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, it is calcium 2 plus. Okay. And the gene which is responsible for motility, it is the Casper gene. We'll discuss in detail in pathology, don't worry about it. Okay. Casper gene. Okay, physio में discuss करेंगे. Okay. So I hope this is like done. चलिए, इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? फटाफट से एक थम्स अप दे दो दैट एवरीथिंग इज क्लियर. अच्छा, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो अब ऑप्स के क्वेश्चंस हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं. कि ब्लीडिंग अगर होती है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, इट इज कॉल्ड एज द हार्टमैन्स साइन. अगर किसी फीमेल में इफ इम्प्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस एंड सडनली ब्लीडिंग इज अकरिंग, ओके, पर विचाइनल ब्लीड हो रहा है, तो इट सिंपली इट इज दिस साइन, इट इज कॉल्ड एज द हार्टमैन्स साइन. ओके. So remember we have the Hartmann sign. It is also called as the placental sign.
नाम ही दिया गया इसको ऐसा. It is bleeding at the time of implantation. Bleeding at time of implantation. Implantation. Apart from that, remember that implantation, it is eccentric beta. It is eccentric. Okay, eccentric कहने का मतलब है एक साइड पर होती है. It is on one side, right? So there is, what is happening? There is asymmetrical growth of uterus. Asymmetrical growth of uterus in early pregnancy. Asymmetrical growth of uterus in early pregnancy, and remember it is called as the Piscasic sign. These all signs are important. They have been asked in the exam. तो इस पे भी डॉलर लगा लो. It is called as the Piscasic sign. Okay. And remember, yeah, phases of implantation. If we just focus on the phases of implantation, what was the first phase? It is apposition. Apposition. Okay. It will first identify, then it will adhere, that is called as the adhesion, and third one it is called as the invasion. Invasion मतलब पूरा अंदर invade कर देगा. Invasion, apposition, adhesion and invasion. Apposition, adhesion and invasion, guys, right? So remember there are certain molecules that we have to remember over here. It is facilitated by integrins and selectins. Again, these are like याद करने वाला क्वेश्चन है. Invasion, basically it is facilitated by an enzyme that is called as the metalloproteinase. Okay, metalloproteinase, sorry, yeah, metalloproteinase enzyme. Okay, and apposition is basically facilitated by pinopods. Now when I say pinopods, beta, pinopods का मतलब है these are villi like structures that are present in the endometrium. So they help in receiving this blastocyst. Okay, so remember guys, these are villi like structures which are present. Pinopods की अगर बात करें, pinopods, these are villi like structures present in endometrium. Endometrium, right? So that is something you have to remember. Okay, so एक जो point हम लोगों ने लिख लिया है, but I wanted you to mention in your notes as well. So remember that beta, the zygote moves into the uterine cavity. The zygote moves into the uterine cavity due to two reasons. One is the peristalsis. Okay, peristalsis in the tube, rhythmic contraction and relaxation. Contract or relax करती है tube, तभी zygote आगे move करता है. And remember guys, I told you it is the main reason. And apart from that, we have the ciliary movement, and that ciliary movement comes from the cuboidal cells, sorry, the columnar epithelial cells, and these columnar epithelial cells contain cilia, which helps in the movement of the zygote from the fallopian tube into the uterine cavity. I hope till now it is clear, guys. I hope till now it is clear, everyone. Just give me a thumbs up, guys, if it is clear. Done. चलिए फटाफट से एक थम्स अप दे दो, फिर लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. यस, तनुप्रिया, तन्वी, गणेश, करिमा, वीर, डिंपल, दारा, अविका, वेरी गुड गाइस. फटाफट से एक थम्स अप. सत्यश्री, वेरी गुड. आदित्य,
प्लीज एक्टिव पार्टिसिपेशन चलेगा, समझना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज ओनली द की टू सक्सेस। जितना सही से समझोगे उतना सही से आएगा, ठीक है। चलो, जीनल, लक्षिता, इशिता, तन्वी, वेरी गुड गाइस। चलो, अब फटाफट से लास्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। चलो, पहले उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। जोना हैचिंग अकर्स एट, जल्दी बताइए, जोना हैचिंग अकर्स एट 4 days after fertilization, 6 days after fertilization। ए, सी। चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका आंसर गरिमा, वेरी गुड। चलो, या क्रिस्मा, वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गणेश यादव, तुमने तो मुझे ही ऑप्शन दे दिया है। नहीं, सी पे तो बेटा ब्लास्टोसिस्ट बन के तैयार है ना। चलो, दिमाग लगाओ। 4th डे पे एंट्री कर रहा है, 6th डे पे इम्प्लांट कर रहा है, तो बीच में हैचिंग कब होगी? यस, यस गाइस। चलो, चलो, वेरी गुड गाइस। नाउ, guys, question is implantation occurs on, ओके, ये एक पुराना क्वेश्चन है। हाँ, देखो, बेस्ट आंसर चूज करो इसमें से। implantation occurs on, ठीक, ठीक है। और कंप्लीट किस डे पे होता है? दैट इज डे 10। नाउ, हेडिंग डाल दीजिए। हाँ, नाउ पुट द हेडिंग एज, यस, द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो प्लीज पूरी एनर्जी के साथ आप लोग मेंटेन करिए। ज्यादा तो हम लोग वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अब ध्यान से देखना, जहां पे डायग्राम छोड़ा था, wherever where I just left the diagram, from there only I will start, ताकि आप लोग का माइंड क्लैरिटी, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि हो क्या रहा है। तभी आगे चल के जो आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके आंसर्स आ पाएंगे। तो योग सैक वगैरह, एपी जर्म, सॉरी, जेनाइटल रिच मुझसे पूछ रहे थे, योग सैक पूछ रहे थे, एमनियन, कोरियन, ये सब अभी क्लियर हो जाएगा, देखो। हम्म, so you guys already know कि we have the outer cell mass, ठीक है। और अंदर क्या था? वी हैव, जहां से डायग्राम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करूंगा। वी हैव द इनर सेल मास, right? The outer cell mass and we have the inner cell mass. Okay, the outer cell mass and the inner cell mass. तो ये बेसिक चीज तो सबको क्लियर ही थी कि ये आईसीएम है, आईसीएम इनर सेल मास हो गया, और ये ब्लैक वाला जो है इट इज द आउटर सेल मास, आउटर सेल मास। और ये जो कैविटी थी बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते थे? ब्लास्टोसील, जिसमें यूट्राइन फ्लूइड आ गया था। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे रहे थे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब यहां से स्टार्ट होगी असली, द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब ध्यान से सुनो, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इज द वीक ऑफ
तो ये लिख लेना, इसमें क्या देखने को मिलेगा, वीक ऑफ बाइलेमिनर germ disk. It is the week of bilaminar germ disk. It is the week of bilaminar germ disk. Okay, दो लेयर्स बन के तैयार होती हैं बेटा इसमें, ठीक है, दो प्रिमिटिव जर्म लेयर्स बन के तैयार होती है। बाय का देखो ना, बाय का मतलब क्या होता है, टू लेमाइनर लेयर्स हो गई, तो टू दो लेयर्स बनेंगी, ठीक है, प्रिमिटिव लेयर्स। वो बाद में चल के जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाएंगी, बट उससे पहले एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनता है, तो वो अब हम देखेंगे वो कैसे बनता है। तो आउटर सेल मास, ओके, आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब आउटर सेल मास को मैं बार बार सेल्स के फॉर्म में नहीं बनाऊंगा, आई विल ड्रॉ इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लाइन नाउ गाइस। Okay, I will draw it in the form of a single line, and the outer cell mass after implantation, it is called as trophoblast. It is called as trophoblast. तो trophoblast क्या है, outer cell mass ही है after implantation. Outer cell mass after implantation. हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, सिर्फ नाम चेंज किया है, नामकरण कर दिया उसका, और नाम क्या हो गया है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। आउटर सेल मास आफ्टर इम्प्लांटेशन, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अब मैं सेल सेल नहीं बना रहा हूं बार बार, मैंने जस्ट एक लाइन बना दी है, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट इट इज द आउटर सेल मास ही, और इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट विल हैपन, इनर सेल मास, अब ध्यान से सुन, इनर सेल मास में से एक लेयर जो है, इट विल differentiate one layer of cells of the inner cell mass will be differentiated and it will come near to the cavity, okay, I mean, and it will give rise to one single layer of cells, ये inner cell mass ही है, which will differentiate into hypoblast, okay, which will differentiate into hypoblast, okay, so this layer, it is now called as the hypoblast. hypoblast किससे बना हुआ है, इनर सेल मास से, ओके, और हाइपोब्लास्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म। हाइपो का मतलब ही क्या होता है, नीचे, प्रिमिटिव एंडोडर्म। अब गाइस ध्यान से सुनना, मैंने बोला है प्रिमिटिव एंडोडर्म, एंडोडर्म नहीं है, ये बाद में चल के थर्ड वीक में एंडोडर्म बनाएगा। अभी ये क्या है, इट इज द हाइपोब्लास्ट और वी कॉल्ड इट एज द प्रिमिटिव एंडोडर्म, ओके, ये बाद में चल के एंडोडर्म बनाएगा। अभी हमारी क्या तैयार हो गई है, हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट किसकी बनी हुई है, इनर सेल मास विल डिफरेंशिएट एंड बीच में कैविटी की तरफ इट विल फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज द हाइपोब्लास्ट, राइट। सो यस, और इनर सेल मास बाकी एज इट इज रहेंगे, कुछ सेल्स इनर सेल मास के, सम सेल्स ऑफ द इनर सेल मास विल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द हाइपोब्लास्ट, राइट, और बाकी इनर सेल मास ऐसे ही रहेंगे। तो यस, आई जस्ट ड्रॉ द रेस्ट सेल्स, ओके, ये बाकी सारी इनर सेल मास है। तो यस, दिस इज द इनर सेल मास, ये इनर सेल मास, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सब लोगों को। फर्स्ट थिंग हैपनिंग in the second week beta, it is the cells of the inner cell mass, okay, which are forming towards the cavity, okay, they will give rise to the first primitive germ layer, and that first primitive germ layer, it is called as the hypoblast. The first primitive germ layer, that is called as the hypoblast, okay. So remember guys that, yeah, in the second week the inner cell mass, okay, which are facing towards the cavity, cells inner cell mass वो जो cavity की तरफ face कर रहे हैं, okay, they will give rise to the first primitive germ layer, and that germ layer it is called as the hypoblast or the primitive endoderm, okay, तो एक germ layer बनके तैयार हो गई, ठीक है। hypoblast का मतलब क्या होता है, below, cavity की तरफ वाले, okay। now अब जो बाकी इनर सेल मास है, बाकी जो इनर सेल्स हैं जो रेड वाले हैं,
they what will do, they will presume the tall columnar shape. Again, I will draw the diagram for you people. So they will presume the tall columnar shape. So let us just try to draw it again. So what will happen next? That again, I'm trying to draw the same diagram. तो ये बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी? ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअल में क्या है? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ, व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट गाइस? व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताइए. ट्रोफोब्लास्ट है क्या? कौन सी सेल से बना हुआ ट्रोफोब्लास्ट है क्या एक्चुअल में? या आउटर सेल मास है? आउटर सेल मास है, तो मैंने वहां वो सेल्स नहीं लगा रखे हैं. तो अब व्हाट विल हैपन, द रिमेनिंग, ये जो रेड वाले जो रिमेनिंग जो है, ओके, द रिमेनिंग रेड वाला जो है इनर सेल मास, दे विल नाउ डिफरेंशिएट. ओके, तो पहले हम लोग ये बना लेते हैं, हाइपोब्लास्ट अपना बना लेते हैं. ये मैंने हाइपोब्लास्ट बना लिया. ये क्या हो गया? हाइपोब्लास्ट. यस, दे आर गिवन अ न्यू नेम, दैट इज, हाँ वो बिल्कुल ठीक है निकिंदर रेड्डी, वेरी गुड. अब ये हाइपोब्लास्ट बन गया. इसी हाइपोब्लास्ट के ऊपर अब ये रेड वाली सेल्स थी, रेड वाली का इनर सेल मास ही है. तो अब ये इनर सेल मास व्हाट विल बी द डू, दे विल प्रिज्यूम टॉल कॉलमनार शेप. ओके, जस्ट अ मोमेंट. So they will presume tall columnar shape. ये tall columnar cells हैं. The inner cell mass will presume the tall columnar cells. Okay, and this is something which is called as the primitive ectoderm, or it is also called as the epiblast. Okay, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Primitive ectoderm. कल मुझसे कोई पूछ रहा था एपीब्लास्ट क्या है, तो एपीब्लास्ट क्या है? प्रिमिटिव एक्टोडर्मी है. तो ये एपीब्लास्ट इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम which cells? Now guys, epiblast is formed from which cells? Hypoblast it is formed from which cells? जल्दी से बता दो, क्योंकि इसमें ना पीछे रेट्रोग्रेड मैनर में याद करना जरूरी है. एपीब्लास्ट किससे बना हुआ है और क्या कहते हैं हाइपोब्लास्ट किससे बना हुआ है? यस, इनर सेल मास. वेरी गुड, दोनों इनर सेल मास बिल्कुल सही है, दोनों इनर सेल मास से बने हुए हैं. ओके, तो फर्स्ट प्रिमिटिव जर्म लेयर टू बी फॉर्म्ड. अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन के आंसर्स. तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिमिटिव जर्म लेयर दैट इज फॉर्म्ड? टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिमिटिव जर्म लेयर दैट इज फॉर्म्ड? बेटा आउटर वाली तो आउटर ही है ना, आउटर सेल मास तो ट्रोफोप्लास्ट ही हो, तो कुछ किया ही नहीं अभी मैंने उसका. हाइपोप्लास्ट. यस गाइस, टू एमसीक्यू क्वेश्चंस, दो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को याद होना चाहिए. फर्स्ट primitive, yes, germ layer to be formed, और वो कौन सा है? दैट इज हाइपोब्लास्ट. सेकेंड प्रिमिटिव जर्म लेयर, सेकेंड primitive germ layer to be formed. बताओ, germ layer to be formed, what it is? एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट को प्रिमिटिव एक्टोडर्म बोलते हैं, मतलब यही आगे चल के क्या बनाएगा? एक्टोडर्म. एंड हाइपोब्लास्ट इट विल in future will form the endoderm. Okay, it will in future will form the endoderm. I hope this is clear to everyone. Lakshita, yes, very good. I hope this is clear. This particular thing is clear to everyone. कौन सी चीज कहां से आ रही है, माइंड में सेट होना बहुत जरूरी है. तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो सारे के सारे जो भी लेक्चर्स अटेंटिवली सुन रहे हैं, फटाफट से एक थम्स अप दे दो. हाँ, यस सर. ओके, लक्षिता, तन्वी, तनु, वेरी गुड. जसिता, अनुष्का, डिंपल, अबिका, कपिल, तनु, एंजल, गरिमा, सत्यश्री, इशिता, जीनल, महफूज, कनेश, अंशिका, जेनेत, आदित्य, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड पार्टिसिपेशन एज ऑफ नाउ.
प्लीज ट्राई टू अटेंड द क्लासेस लाइव, और इसी से आप लोग को डायग्राम्स बना बना के सिखाऊंगा, तो बहुत इजी होता है चीजों को रिटेन रखना, देखना। बाकी बुक में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, गूगल पे भी सब मिल जाएगा। इट्स बेटर कि लाइव क्लासेस का मतलब ही यही है कि आप लोग बैठिए और साथ साथ बनाइए और सीखिए। ठीक है, चल आगे चले। अब नाउ, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एवरीथिंग इट इज कमिंग फ्रॉम द इनर सेल मास। ये तो आई होप सबको क्लियर हो गया अब तक। ठीक है, एवरीथिंग इट इज कमिंग फ्रॉम द इनर सेल मास। आउटर सेल मास का तो कुछ काम नहीं है, वो तो बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो याद रखना बेटा, कहाँ से स्टार्ट किया था, जाइगोट से, फिर मोरेला, फिर एडवांस मोरेला इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट से फिर हम यहाँ आए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अब अगला डायग्राम और देखिए बेटा। नौ, सबसे पहली बात, अभी आउटर सेल मास का कोई काम नहीं है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट का कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए, तो अभी उसको हम लोग एज इट इज ब्लैक से ही बनाएंगे। तो कलर कोडिंग हमेशा सेम रखिएगा। अभी डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग बिल्कुल सेम रखिएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रोफोब्लास्ट। तो इसका कोई काम नहीं है, ये आउटर सेल मास ही है, दैट इज जस्ट गिवन अ नेम आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो आउटर सेल मास को हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने क्या बनाया था, एपीब्लास्ट बनाया था। ठीक है, द टॉल कॉलमनार सेल्स, द टॉल कॉलमनार सेल्स। नाउ ये क्या है, एपीब्लास्ट है, या प्रिमिटिव एक्टोडर्म है। ये आगे चल के एक्टोडर्म बनाएगा, एपीब्लास्ट और प्रिमिटिव एक्टोडर्म, primitive ectoderm. Now, this epiblast will give rise to a cellular layer above. Okay, it will give rise to a cellular layer above, which will line from inside. Okay, इन्हीं सेल से, okay, it will give rise to a cellular layer above इन्हीं epiblast सेल से, which will line from inside. Okay, ये ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ it will give rise to a cellular layer which will line from inside. And remember guys that these cells are given a name, and these are called as the amniogenic cells. These are called as the amniogenic cells. Now, my question is, amniogenic cells are derived from what? Amniogenic cells are derived from, जल्दी से बताइए। एमनियोजेनिक, यस तन्वी, वेरी गुड। श्रद्धांजलि, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। कृति खंडेलवाल, अविका, वेरी गुड गाइस। एमनियोजेनिक सेल्स, या दे आर derived from the epiblast. तो एमनियोजेनिक सेल्स बेटा, रिमेंबर दे आर derived from epiblast. They are derived from the epiblast, right? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अब नीचे की तरफ क्या था, और बीच में एक कैविटी बन जाती है बेटा, उस कैविटी को हम लोग नाम देते हैं, कैन एनीवन टेल मी, दिस इज कॉल्ड एज द एमनियोटिक कैविटी। A cavity is formed in between, okay, between the amniogenic cells and the epiblast, और उस कैविटी को हम लोग नाम देते हैं, दिस कैविटी इट इज कॉल्ड एज amniotic cavity. It is giving rise to a cavity, and this cavity it is called as the amniotic cavity. This cavity it is called as the amniotic cavity. Right? Now, below कौन सी सेल्स थी हमारी, below we have the hypoblast. Okay, below we have the hypoblast. तो ये बिलो वाली सेल्स क्या है, हाइपोब्लास्ट। नाउ दिस हाइपोब्लास्ट will give rise to
okay, a cellular layer, okay, to cover the blastocele from inside, okay. It will give a cellular layer which will cover the blastocele from inside. And this is something, guys, you should know. This is called as the Husser's membrane, okay. So it will give rise to a cellular layer which will cover the this blastocyst from or blastocele from inside, and this cellular layer, it is given a special name, and this is called as the Husser's membrane. थोड़े से नाम वैसे लगेंगे, but believe me guys, it's the best way to learn. Husser's membrane. And if I ask you, the Husser's membrane is derived from, the Husser's membrane is derived from, again guys, answer it fast. The Husser's membrane is derived from, yes, Anushka, Tanvi, Shraddhanjali, very good. It is the hypoblast. They are derived from the hypoblast. So yes, they are derived from hypoblast cells. The Husser's membrane is derived from the hypoblast cells. And there is a cavity which is formed inside, guys. And remember that, again, Anushka asked me a question yesterday. I think, I don't know the name of the student which asked the question yesterday. So this will give rise to primary yolk sac. This cavity is named as the primary yolk sac. So it is a cavity. We have the hypoblast and the Husser's membrane, and the cavity is inside, which is called as the primary yolk sac. Primary yolk sac. Now, guys, tell me, is this particular diagram clear to everyone? बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने आप लोग को समझाया. I hope this is clear to everyone. Yes. Perfect. Perfect, guys. Yes. Yes. Perfect. Perfect, guys. Perfect. Sumit Paswan. Okay. Anshika, very good. Kapil, very good. Crystal clear. Crystal clear हो गया. ठीक है, बस इतना ही चाहिए. इतना क्लियर हो गया, उसके बाद तो बस अब छोटे मोटे डायग्राम्स हैं, और दो डायग्राम और बनाऊंगा, फिर will end up then. Okay, two diagrams more I will draw for you in the second week. Two diagrams I will draw. So yes, Ankala Janardhan, very good. So two diagrams more I will draw, and then we'll just end up with a second week. Now, one is a very short diagram. So yes, two diagrams more I will draw, and these are very short diagrams now. इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब एक के लिए तो बोल सकता हूँ. चल चल ध्यान से देखो बेटा. अब ये जो रेड वाली पूरी लेयर थी ना, एमनियोजेनिक सेल्स की और एपीब्लास्ट की, इसको आई एम जस्ट ड्रॉइंग लाइक दिस नाउ. इसको मैं एक लाइन की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ इन सेल्स को. ठीक है. अब कहते हैं कि सेकेंड वीक में इज देयर एनी मीसोटर्म? No, guys, there is no mesoderm in the second week, but yes, there is extra embryonic mesoderm. Mesoderm जो एम्ब्रियो के बाहर बन रहा है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm बोलते हैं. सेकेंड वीक में तो मैंने आपको यही लिखवाया, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमाइनर germ disc. But yeah, mesoderm is formed, but that mesoderm is extra embryonic, जो एम्ब्रियो के बाहर बन रहा है. ठीक है. तो अभी के लिए ध्यान रखो, ये जो पूरी एमनियोजेनिक सेल्स और एपीब्लास्ट थी, उसको मैंने रेड से बना दिया. ठीक है. और रिमेंबर गाइस, जो नीचे हाइपोब्लास्ट और वो था पूरा, ठीक है, द yolk sac एंड द Husser's membrane, आई एम ड्राइंग इट विद ग्रीन कलर. ठीक है. तो ये कुछ समवट लाइक दिस, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, राइट. और बाहर की तरफ गाइस, यू ऑलरेडी नो वी हैव द ट्रोफोब्लास्ट. We have the trophoblast. Okay. Just drawn it like this. Yeah, this is the trophoblast. तो लेबलिंग कर लो फटाफट से. ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया. ठीक है. तो ये कौन सी कैविटी है? एमनियोटिक कैविटी है. एमनियोटिक कैविटी है. ये क्या है? ये है yolk sac. दिस इज yolk sac, राइट.
और अब नाउ गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इट इज अराइज फ्रॉम वेयर? अभी भी बुक्स में, इन मेनी ऑफ द बुक्स इट इज रिटन इट इज द ट्रोफोप्लास्ट व्हिच गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. गाइस अगेन दिस इज द आउटडेटेड पार्ट. नाउ यू हैव टू रिमेन द करंट, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, दैट इज द वॉल्स ऑफ द yolk sac. Okay, the walls of the yolk sac or the primary yolk sac, it is responsible for the development of the extra embryonic mesoderm. तो जब मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोल रहा हूँ बेटा, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है. ये पूरा का पूरा क्या है? एम्ब्रियो. इसी एम्ब्रियो के बाहर जो मेसोडर्म बनेगा उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बोलते हैं. तो अगेन सेकेंड वीक में मेसोडर्म क्रिएट नहीं हुआ है, ये एम्ब्रियो के बाहर वाला मेसोडर्म है. दैट इज व्हाई दैट इज इट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, राइट? So remember guys कि extra embryonic mesoderm it is derived from the walls of the yolk sac. ठीक है, walls of the yolk sac. और इसीलिए तो ये जो स्पेस आप लोग को दिख रहा है, इसमें कोई भी पेंसिल कलर हो तो जस्ट ट्राई टू फिल इट ऑफ गाइस. ये जो पूरा का पूरा स्पेस है, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आया कहाँ से? इट इज थ्रू द वॉल्स ऑफ द yolk sac. तो ये जो येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. So this is the extra embryonic mesoderm. और अगेन ट्रोफोब्लास्ट दिया हुआ है कुछ बुक्स में, बट विल गो विद द लेटेस्ट अपडेट. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी yolk sac. It is derived from primary yolk sac. It is derived from the primary yolk sac. Okay. What happens? The walls of the primary yolk sac will proliferate and these cells will accumulate outside, and this will give rise to this mesoderm. Okay, and that is outside this amniotic cavity and yolk cavity. That's why it is extra embryonic. Embryo के बाहर वाला. That's why it is extra embryonic. Embryo के बाहर वाला. Okay. So they are derived from the walls of the primary yolk sac, और ये extra embryonic mesoderm है. Now in the extra embryonic mesoderm what will happen? In the extra embryonic mesoderm what will happen? Small cavities will be formed in the extra embryonic mesoderm. क्योंकि cells है, सेल से क्या बन जाएगा? सेल्स कुछ ना कुछ रिलीज करेंगी. सेल्स किसकी सेल्स है? वॉल्स ऑफ द yolk sac की सेल्स है. तो सेल्स जब रिलीज करती है कुछ ना कुछ, तो छोटी छोटी कैविटीज बन जाती है. ठीक है. Eventually all these cavities will unite together and they will form a one single cavity, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. सीलोम का मतलब क्या होता है? कैविटी होता है, राइट? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, राइट? तो ये छोटी छोटी कैविटीज बन जाती है क्योंकि अंदर भी सेल्स है और सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, तो वो छोटी छोटी कैविटीज बन जाएंगी. ठीक है. तो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज एंड लेटर ऑन दिस होल कैविटीज विल यूनाइट विद ईच अदर. ओके, दे विल यूनाइट विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ वेरी बिग कैविटी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं. और क्योंकि वो एम्ब्रियो के बाहर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. तो जो एक फाइनल डायग्राम है दैट आई विल ड्रॉ फॉर यू गाइस. सो बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आया कहां से और कैसे उसमें कैविटी बनी और क्या हुआ. तो ये सुशांतिका, ओके, तन्वी, लक्षिता, नितिका, शैलेश, वेरी गुड. यस. अनुष्का बेटा देखो, वॉल्स ऑफ द yolk sac, अभी जो प्राइमरी yolk sac की जो वॉल्स है ना, देखो ये जो प्राइमरी yolk sac है, इसकी जो वॉल्स है, ठीक है, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द yolk sac some cells will proliferate. Proliferate वो बाहर जाएंगे
and they will result in the formation of मीसोडर्म. ओके, वो सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे मीसोडर्म में. क्योंकि ये मीसोडर्म इस एम्ब्रियो के बाहर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म बोलते हैं. और सेकेंड वीक में कोई मीसोडर्म नहीं बनता. जो नॉर्मल मीसोडर्म है एम्ब्रियो का, वो नहीं बनता. ये तो एम्ब्रियो के बाहर बन रहा है, तो इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म. ठीक है. और इसी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म ये कहां से डिराइव हुआ है? प्राइमरी योग सैक से, क्योंकि उसी की सेल्स बाहर आई हैं. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ट्रोफोब्लास्ट है, बट अगेन विल गो विद द लेटेस्ट अपडेट बेटा. इट इज द वॉल्स ऑफ द योग सैक which from where the cells proliferate and they differentiate into this particular mesoderm which is outside the embryo, and that is actually the extra embryonic mesoderm. इसी extra embryonic mesoderm में क्या होगा? There will be formation of certain small cavities, और cavities के अब cells कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, तो रिलीज करेंगे तो they need space for their secretions, तो cavities बन जाएंगी. So these small cavities are formed, and later on these all cavities, small cavities will join together and they will form a large single cavity that is called as coelom. सीलोम. और क्योंकि ये एम्ब्रियो के बाहर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बड़ा वाला कैविटी जो है. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ गाइस. चलो, लाइव क्लासेस लिया करो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर यू विल. हाँ. ठीक है. चल, वेरी गुड. ओके, परफेक्ट. तो इसको एक फाइनल डायग्राम जो आज के लिए है, बड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है. या फाइनल डायग्राम. सो रिमेंबर गाइस, यू ऑलरेडी नो जो आउटर वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट. चलो लेबलिंग बताते रहो फटाफट. वट एवर आई एम ड्रॉइंग, इट इज द ट्रोफोब्लास्ट. राइट, ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास. फिलहाल इसका भी कोई काम नहीं है. राइट, ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है. अब हम लोगों ने बनाया था अंदर, कौन सा कलर कोड था? या रेड फॉर द एपीब्लास्ट वाला पार्ट जो एमनियोटिक कैविटी वाला पार्ट है, एंड ग्रीन फॉर दिस. तो विल ड्रॉ दिस. राइट. इसमें दो तीन कंसेप्ट मुझे देने हैं, तो दैट आई विल ओनली गिव. So yes, this is the amniotic cavity, right? This is the amniotic cavity. और नीचे क्या है हमारा? yolk sac. Now this yolk sac guys, this yolk sac, remember guys, इसको इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में. I'm just drawing space. हम्म. Now, what will happen, guys? The extra embryonic mesoderm, okay, the extra embryonic mesoderm will grow in size and will become large. Okay, वो grow करता जाएगा extra embryonic mesoderm. अब वो क्या करेगा? It will compress the primary yolk sac, okay, and will take a part of the yolk sac out. Okay, extra embryonic mesoderm जो है, that is derived from the walls of the yolk sac. Okay, it will grow larger in size, and it will try to compress the yolk sac, and it will take a small portion of the yolk sac out, and the remaining yolk sac will be now called as the secondary yolk sac. अब जो yolk sac बाहर आया है, the yolk sac which came out, it will undergo atresia. उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं, यूजलेस है, atresia हो जाएगा उसका. It will undergo atresia. Okay, it will die. So the secondary yolk sac कैसे बना है? You already know the extra embryonic mesoderm will grow larger in size. Okay, and it will compress the primary yolk sac, and it will take a small portion of the primary yolk sac out. और जो portion बाहर लिया है, it will undergo atresia, and whatever remaining yolk sac will be there, it will be now called as the secondary yolk sac. It will be now called as the secondary yolk sac. Right? मेरा ये तो this I have spoken in English only, medical information.
मजे लेने के लिए आते हो क्या बीच बीच में? मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में लिख भी रहा हूँ। एक दो लाइन अगर हिंदी में निकल जाती है तो वो नेचुरल फिनोमिना है, राइट? तो प्लीज ट्राई टू कॉपरेट। वंस मोर सर, ओके बेटा। बेटा यू ऑलरेडी नो कि हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोटर्म है जो मैंने येलो कलर से मार्क किया, ठीक है? Now this extra embryonic mesoderm will grow larger in size. Okay, it will grow larger in size, Shraddhanjali. And what it will do, it will try to compress the walls of the yolk sac. अब ये जो cells है वो yolk sac को compress करेगी and it will take a small portion of the yolk sac out. Okay, and whatever yolk sac is remaining, it will be now called as the secondary yolk sac. Now you will ask me कि वो जो portion निकाल लिया yolk sac का due to compression, that part will undergo atresia. उसका कोई काम नहीं है, useless है. That part will undergo atresia. इसका कोई काम नहीं है, that is useless. Is this clear, Shraddhanjali now? Is this clear, beta? Right. Okay. Sure. Perfect. Up. Now, I already told you that there is formation of a large coelom और वो सीलोम अब हम लोग बनाएंगे, ओके? यस, एंड दैट सीलोम, या वो छोटे छोटे जो cavities थे, the small cavities, they will like come together and they will form a big cavity, and this is outside the embryo. It is called as the extra embryonic coelom. It is called as the extra embryonic coelom. It is called as the extra embryonic coelom. ठीक है? वो छोटी छोटी जो cavities थी ना बेटा, they will combine with each other and will form a big cavity, extra embryonic coelom. और बाकी सब जगह पर क्या प्रेजेंट होगा? नाउ कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन कि मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम पूरे पे कवर नहीं किया है. आई हैव लेफ्ट वन पोर्शन वेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इज एब्सेंट. व्हाई आई हैव डिड दिस? व्हाई आई डिड दिस एक्चुअली? Any conceptual reason anyone can tell me? Okay, I'm waiting for your answers. प्लेसेंटा नहीं, मतलब ठीक है तुम, अभी इसमें प्लेसेंटा कहाँ से आ गया? अभी तो रुक जाओ इसमें. ठीक है, ठीक है, मतलब अभी थोड़ा सा ना इसको. हम्म तो बाकी जगह पे क्या प्रेजेंट है? दिस इज द, दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. चलो, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड. यस लक्षिता, वेरी गुड. नाउ एक जगह पर अब यूज योर ब्रेन गाइस. अगर ये सीलोम पूरी जगह प्रेजेंट होगा, कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली देयर इज समथिंग व्हिच इज होल्डिंग द एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम, okay, and that is something where the coelom will be absent, and this part beta, and this part, it is called as the undifferentiated mesoderm. Okay, this part it is called as the undifferentiated mesoderm. This is undifferentiated mesoderm. Basically, undifferentiated extra embryonic mesoderm. More precisely, it is the undifferentiated extra embryonic mesoderm. It is like a connecting stalk. It is connecting the embryo, और फ्यूचर में कनेक्टिंग स्टॉक ही जाकर क्या बनाता है? अम्बलाइकस. ठीक है, तो ये यहां पे मत लिखना. हम्म
अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, तो यह लिख भी सकते हो, इन फ्यूचर इट विल ओनली फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर पूरा कवर होगा तो हैंग कैसे करेगा वो, तो इसलिए वो एक पोर्शन छूटा हुआ है, बिकॉज इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोटर्म। ओके, तो दैट इज एक्चुअली कनेक्टिंग, इट इज अ कनेक्टिंग स्टॉक बिटवीन द एंडोमेट्रियम एंड दिस, एंड इट इन फ्यूचर विल फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड, इन फ्यूचर विल फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये वाला पोर्शन सबको क्लियर हो गया है ना? ठीक है, आई थिंक ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया है सबको। फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी से, ठीक है। चलो, फटाफट से थम्स अप दे दो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर थम्स अप। तो इसमें एक दो चीजें और बतानी है मुझे। चल, ठीक है, अब इसी डायग्राम में दो तीन चीजें और ऐड कर लेते हैं बेटा। अब देखो, मीजोडर्म जो है एक सेकेंडरी योग सैक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के बीच में प्रेजेंट है, और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और ट्रोफोप्लास्ट के बीच में प्रेजेंट है। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट नेम्स फॉर दीज मीजोडर्म, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट नेम्स फॉर दीज मीजोडर्म। Okay, so remember the mesoderm which is lying between the extraembryonic coelom and the trophoblast, it is called as the somatopleuric extraembryonic mesoderm. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मीजोडर्म ही है बट इसका नाम क्या हो जाएगा? सोमैटोप्यूरिक। ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जस्टिफाई भी करता है। सोमैटो का मतलब होता है बॉडी वॉल, बॉडी की बात करें तो बॉडी वॉल तो बाहर की तरफ होगी ना, तो इट इज नेम्ड एज सोमैटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब जो मीजोडर्म दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड द सीलोमिक कैविटी, इस वाले जो मीजोडर्म को, और इसको मैं अलग से मार्क करूंगा, इसको मैं अलग से मार्क करूंगा, या दिस आई विल मार्क this this mesoderm around the secondary yolk sac. अब ये पूरा एमनियन तक नहीं लेकर जाएंगे, why it will not towards will be towards the amnion, क्योंकि ये जो mesoderm है it is only surrounding the secondary yolk sac, इसको पूरा आप ऊपर तक नहीं लेके जा सकते, because the secondary yolk sac is going to form your future gut. Okay, I mean your gut tube, hind gut, mid gut, okay, foregut, hind gut, mid gut. So everything, every part, the internal organ part, okay, the stomach, pancreas, liver, everything is derived from the yolk sac. वो सब कुछ yolk sac से बनके तैयार होगा। तो ये mesoderm जो है, it is just surrounding this yolk sac, right? So that is something which is called as splanchnopluric mesoderm. It is called as the splanchnopluric extra embryonic mesoderm. Extra embryonic mesoderm. अब स्प्लैंक्नो का मतलब ही क्या होता है बेटा? विसरल। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, जो ऑर्गन्स को डेवलप करेगा। ओके, जो पूरा फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, पूरा जो स्टमक, पेनक्रियास, तो ये जो मेसोटर्म है इट विल ओनली अप टिल द सेकेंडरी योक सैक। इसके ऊपर का सारा आप लोग क्या बोलोगे? सोमैटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोटर्म। तो इसकी भी एक बाउंड्री है, दैट इज अप टिल ओनली द सेकेंडरी योक सैक, राइट। और स्प्लैंक्नो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल गिव राइट्स टू द इंटरनल विसरल ऑर्गन्स। बाहर वाली तो बॉडी वॉल के लिए हो गई, और अंदर वाली जो इंटरनल ऑर्गन्स को फ्यूचर में जाकर इट विल जनरेट इट, राइट। फटाफट से थम्स अप दे दो, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? इतना समझ में आया? चलो, ठीक है, युप युप युप। ओके, अब चलो, अब फाइनल जो दो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
Now, guys, listen. This structure, which I have just highlighted, it is called as the amnion. Amnion. एमनियन. अब आप मुझे बताइए एमनियन किसका बना हुआ है. इट इज फॉर्म फ्रॉम अंदर की तरफ क्या है एमनियोजेनिक सेल्स है. याद है ये एमनियोजेनिक सेल्स थी रेड वाली. दीज आर द एमनियोजेनिक सेल्स which are inside. So amnion it is formed from the amniogenic cells. Okay. प्लस कौन सा मीजोडर्म है यहाँ पे बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ कौन सा मीजोडर्म है अराउंड द एमनियोजेनिक सेल which mesoderm is present guys. हाँ. Yes, fun mode, very good. It is the somatopleuric extra embryonic mesoderm. तो amnion जो है, it is amniogenic cells plus somatopleuric extra embryonic mesoderm. मैंने short form में लिख दिया EEM. It simply indicates it is the somatopleuric extra embryonic mesoderm. So amnion जो है, it is actually formed from the amniogenic cells and the somatopleuric extra embryonic mesoderm. And there is one more structure, guys, that you have to know. It is called as the chorion. Okay, it is called as the chorion. Okay. Now, chorion, it is formed from which two layers, guys? Which mesoderm it will be? Somatopleuric, extra embryonic mesoderm, and we have trophoblast. So these are again two important questions कि amnion का composition क्या है और chorion का composition क्या है. What is the composition of amnion and what is the composition of chorion? I hope this is clear to each one of you. Yes, I hope this is clear to each one of you. Splenic कहाँ आएगा बेटा सोमैटोप्लूरिक ही है ना येलो वाला तो पूरा. हम्म. I hope the points that we have discussed today are pretty clear to each one of you. The second week of development is clear. The first week development is clear to everyone, right? All the blastocyst important points, the diagrams which I have drawn today are like the flow charts, events leading to fertilization, the structure of secondary oocyte, and the stages in the development of the follicle. I hope it's clear to everyone over here. So let's end the session today over here. Yes, let's end the session today over here. So I hope you all loved the session and we are all going to meet tomorrow. Right? At the same time, 10:30 and we'll discuss the further embryological development, the week 3 and week 4, and then we will start with our next topic. Right? Okay. What you guys want me to discuss first, the gastrointestinal system or the lower limb? Okay, just in the chat box if anyone wants to answer, the gastrointestinal system or the lower limb. Kapil is saying lower limb, GIT, GIT. Okay, GIT, lower limb. चलो दोनों कर लेंगे, क्या दिक्कत. हाँ, लोअर लिम्ब. जीआईटी करेंगे बेटा, जीआईटी विल स्टार्ट. जीआईटी पूरा इसके साथ जीआईटी चलता रहेगा. जीआईटी विल स्टार्ट विद द जीआईटी पार्ट. नो नीड टू वरी. लोअर लिम्ब भी कर लेंगे, डोंट वरी. We'll have a parallel class. Don't worry. Absolutely don't worry. Right? Okay. चलिए. ठीक है guys. So let's just end the session. Okay. Goodbye. Goodbye guys. Goodbye.